कंटेनर में और दूसरी भी तीसरे कंटेनर पे, और उसको मैंने लोड बैलेंस कर दिया, पर रखा मैंने उसको सेम वीएम के ऊपर है। क्या फायदा? हाई अवेलेबिलिटी नहीं है। जब वो वीएम मरेगी या खत्म होगी, तीनों की तीनों इंस्टेंस एक साथ खत्म हो जाएगी। ना तो फॉल्ट टॉलरेट हुआ, ना हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी फॉर द टाइमिंग जब तक चल रहा है तब तक तो अचीव हो रही है, बट फॉल्ट को तो नहीं टॉलरेट कर पाया ना। दूसरा कंडीशन मैं ये कह सकता हूँ कि वीएम नंबर 1 के ऊपर मैं पहला इंस्टेंस चला दूं, माइक्रो सर्विस 1 का पहला कंटेनर, जो दूसरा इंस्टेंस चलवाना माइक्रो सर्विस 1 को वीएम नंबर 2 पे चलवा दूं। वैसे ही अब नेटवर्किंग में दिक्कत आएगी उनकी आपस में, क्योंकि वैसे ही जैसे पहले तो कम्प्लेक्स नेटवर्किंग हो जाएगी, बट कम्प्लेक्स टाइप की नेटवर्किंग होगी। बट इसमें एक फायदा ये होगा कि अगर वीएम नंबर 1 खत्म हो जाती है, तो उसका उसी माइक्रो सर्विस का दूसरा इंस्टेंस वीएम नंबर 2 पे चल रहा है, तो फॉल्ट को तो टॉलरेट कर ही दिया उसने, लोड बैलेंस अगर हो रहा है तो मतलब इस तरह से। बट ये सारी चीजें मैनुअली करने में बहुत मुश्किल आती है। मैं 10-12 वीएम की अपने कंटेनर्स की बात कर रहा हूँ, तो मेटा डेटा दिमाग में रखना मुश्किल हो जाता है। जब यही चीज स्केल हजारों के स्केल में हो जाए ना, और उसके हजारों के ऊपर भी स्केल लगभग हाई अवेलेबिलिटी के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 कर लो अगर बढ़िया, तो ये 10,000 ऑफ सो मतलब बहुत लार्ज स्केल पे चले जाते हैं। तो उसको ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कंट्रोल करना चीजों को। क्या पता एक पॉइंट इन टाइम पे एक क्रैश कर रही है, दूसरे में दूसरे वाले की क्रैश करना, तो बंदे तो पागल हो जाएंगे उसी को ही संभालते हुए। एक अभी क्रैश हो रही है, वो दूसरे के पास चले जाएगा, उसको सॉल्व करेगा, उससे पहले तीसरे वाले में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। वो तो मतलब 24/7 जॉब होगी, तो वो दिक्कत हो जाती है। अब इस चीज को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? इस चीज को सॉल्व करने के लिए एक आर्किटेक्चर आया मार्केट में। जैसे हमने अभी बात की ना कि मल्टीपल वीएम्स तो मुझे चाहिए, तो मल्टीपल वीएम्स के ऊपर मैं मल्टीपल कंटेनर्स भी चला सकता हूँ। तो बट अब इसको क्यों ना ऑटोमेट किया जाए। तो इन्होंने क्या किया, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये ओके। अब यहाँ पे सेम सिनेरियो में ले रहा हूँ। एम आई ऑडिबल एंड इज माय स्क्रीन विजिबल टू यू ऑल? यस सर। यस सर। ओके। अब ये सभी वीएम्स हैं, ये वीएम है, ये वीएम है, ये सारे वीएम्स हैं। मैंने क्या किया, ये सभी वीएम्स के ऊपर सबसे पहले डॉकर इंजन इंस्टॉल कर दिया, क्योंकि कंटेनर्स को चलाने के लिए प्री रिक्विजिट है कि डॉकर इंजन होना चाहिए नीचे। अभी तो वो कंटेनर मतलब इन्वायरमेंट को समझेगा और स्पिन करवा पाएगा इमेजेस को लेके। सेम किया। उसके बाद एक और एक्स्ट्रा चीज मैंने इसमें रख दी। वो क्या है? वो है कुबरनेटिस का क्यूबलेट, एक ऐसी चीज जो बात कर सके ऊपर की वीएम्स जो बैठे हैं। ये भी वीएम्स है, इनको मास्टर कहते हैं। एसिड होगी जो एक्चुअल में मेटा डेटा या डाटाबेस, पूरे ये प्लेटफॉर्म है। आप एक बेसिकली ऐसे समझो कि काम इनने करना है, जो ब्लू वाले, जिनको मैं ब्लू वाले कह रहा हूँ, इन्होंने एक्चुअल में काम करना है। सारे जो भी कंटेनर्स हैं इनके ऊपर स्पिन होंगे। बट सारी चीज को ऑटोमेट करने के लिए कि कौन से कंटेनर को किस टाइम पे कब कहाँ पे स्पिन करवाना है, कैसे हाई अवेलेबिलिटी अचीव होगी, जो चीजें अभी हमने पहले डिस्कस करी ना मैनुअली करने के लिए मल्टीपल वीएम्स के ऊपर, वो सब ऑटोमेट कैसे होंगे, उसके लिए ना ये मास्टर वीएम्स होते हैं। इनके अंदर कंट्रोल प्लेन में
वो बैठे होते हैं, कुछ एपीआईज क्या कहते हैं, कुछ शेड्यूलर्स बैठे होते हैं, या मान के चलो छोटे मोटे में कहूँ कि सॉफ्ट सॉफ्ट एक पीस ऑफ कोड, सॉफ्टवेयर ऐसा लिखा हुआ जो सारी चीजों को जानता है कि भाई उसको मैंने एक प्रोग्राम सा लिख के दे दिया जिसको हम मैनिफेस्ट कहते हैं, YAML फाइल, कि मेरे को अचीव क्या करना है इस एप्लीकेशन से। वो उस प्रोग्राम या YAML फाइल जिसको कहते हैं YAML फाइल, उसको रीड करता है ह्यूमंस ने, जिसके अंदर अपनी इंटेंशन बता दी है कि मुझे एप्लीकेशन को कैसे चलवाना है, कितनी नंबर ऑफ माइक्रो सर्विसेज हैं, डिप्लॉयमेंट्स कब होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, और मेरे को कितना स्केल अचीव करना है। स्केल मीन्स एक माइक्रो सर्विस के कितने इंस्टेंसेस पैरेलली चलने चाहिए और लोड बैलेंस कैसे होने चाहिए। वो मैंने एक बार एक कोड में लिख के दे दिया इसको, वो मास्टर के पास चला जाता है। मास्टर मीन इस वाली के अंदर वो चला गया। तो इनके अंदर जो पीस ऑफ सॉफ्टवेयर बैठे हुए ना, उनकी जिम्मेवारी है कि इन वर्कर्स के ऊपर जैसा यूजर ने कहा है उस हिसाब से कंटेनर्स को चलवाना है। और अगर कहीं पे, और ये साथ में ये भी देखते रहते हैं साथ साथ में मास्टर नोड्स के अंदर बैठे हुए सॉफ्टवेयर, कि क्या कोई कंटेनर किसी वजह से खराब तो नहीं हो गया, मर तो नहीं गया, डेथ तो नहीं होगी उसकी, या कोई वर्कर नोड जो एक्चुअल में पूरी लिनक्स की वीएम बैठी हुई है वही ही तो नहीं अनअवेलेबल होगी, मे बी ड्यू टू एनी सर्टेन कंडीशन कि वो ऑपरेटिंग होस्ट का करप्ट हो गया, तो वो अवेलेबल है भी है कि नहीं। वो ये सब सब चीजों को देखता है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो जो चीजें चलनी चाहिए जो यूजर चाहता था उसको, और देखना कि उसके ऊपर तो वो वाली कंटेनर चल रहे थे। अब क्योंकि एक्चुअल में नोड ही नहीं रही, वो वीएम ही नहीं रही, तो अल्टीमेटली वो अब अनरीचेबल हो गए होंगे कंटेनर। वो वही वाले कंटेनर किसी और वर्कर नोड के ऊपर चला देता है, और उस हिसाब से उसकी नेटवर्किंग खुद से कर देता है। और यूजर जो बाहर बैठा हुआ है, जो जो क्लाइंट्स बैठे हुए हैं जहां से वो रिक्वेस्ट भेजे, उनको कुछ भी नहीं पता चलेगा, उनको लगेगा कि सब स्मूथली चल रहा है। बस 10-15 सेकंड का लैग आएगा, कंटेनर यहाँ से खत्म हुआ दूसरी जगह पे स्टार्ट हो गया, और उस 10-15 मिनट सेकंड्स के बाद ऑटोमेटिकली वैसे ही स्मूथ चल रहा होगा जैसे वो पहले चल रहा था। समझ आई थोड़ी बहुत कि क्या है ये? अगर नहीं आई तो अभी पूछ लो, इसको बहुत क्लियर कर देंगे तो ये समझ आ जाएगा कि मतलब एक्चुअल में करना, अचीव क्या करना था। टर्मिनोलॉजीज बहुत सारी आएंगी, क्यूब कंसेप्ट आएंगे, अरे, क्यूब प्रॉक्सी। थोड़ा सा हाँ जी। थोड़ा सा सर रिपीट हो सकता है ये? हाँ, बात यहाँ पे यही थी कि मेन मुद्दा हमारा ये था कि हमें कंटेनर्स, आपको ये पता है कंटेनर्स के अंदर चलती है माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन या एप्लीकेशंस। जैसा कि हमने अभी पिछले वाले टास्क में करके देखा है, एक वेब सर्वर हमने चला दिया कंटेनर के अंदर। अब उसी वेब सर्वर को अगर मुझे स्केल करना है, मान लो अभी वो 10,000 रिक्वेस्ट को सर्व कर सकता है, और मुझे चाहिए कि मुझे 1 लाख रिक्वेस्ट को सर्व करना है, तो मैं सेम कंटेनर, सेम डॉकर इमेज से 10 कंटेनर अलग अलग चला सकता हूँ, सिर्फ 10 बार एक ही कमांड चला के। नाम अलग अलग करना है, बस 10 कंटेनर रन हो जाएंगे ना पैरेलली। मतलब 10 अलग अलग वीएम्स विद इन स्पैन ऑफ ए सिंगल मिनट और सो बन जाएंगे, मिनटों में बन जाएगा सारा कुछ। ये कंटेनर्स की या डॉकर की ये पॉजिटिविटी थी, मतलब ये एक उसकी ताकत थी। ओके, ये हम समझ चुके हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये कि ये सब कुछ मुझे मैनुअली करना पड़ता है। मैं हर एक कमांड को चलाऊं, वहां पे कंटेनर बने, फिर उसके बाद नेटवर्किंग और भी कॉम्प्लेक्स होगी अगर मेरे को मल्टीपल अलग अलग वीएम पे कंटेनर चलाने हैं। नो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि मल्टीपल वर्कर नोड्स, वर्कर नोड कुछ नहीं है, कुछ वीएम्स हैं अलग अलग जिनके ऊपर डॉकर इंजन बैठा हुआ और वो कंटेनर स्पिन करवा सकते हैं, वो रख लिए। और यहाँ पे आपको ब्लू कलर में जो भी दिख रही है उनको हम वर्कर नोड कहते हैं। वर्कर नोड क्या हुई, जिनके ऊपर एक्चुअल में जो वर्कलोड है, कंटेनर्स हैं हैविंग माइक्रो सर्विसेज और एप्लीकेशन, वो स्पिन करेंगे, वो चालू होंगे, वहां से सर्व करेंगे। बट इस सारी चीज के ऊपर जो भी चीजें आएंगी, मतलब कौन से कंटेनर को कहाँ चलाना है, कौन सी माइक्रो सर्विस है, उसके कितने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस होने चाहिए, वो कैसे पता चलेगा? जब मुझे पता होगा एप्लीकेशन वाले को कि मेरी ये वाले अगर सर्वर बैठा हुआ है, एक भी वेब सर्वर, उसके ऊपर एट ए टाइम 1 लाख रिक्वेस्ट होती है, और एक जो कंटेनर हो सिर्फ 10 को कर सकता है, 10,000 को रिक्वेस्ट को सर्व कर सकता है, तो उसको ऑटोमेटिकली नंबर पता चल गया कि एट एनी सिंगल पॉइंट इन टाइम ऐसे 10 कंटेनर पैरेलली चलने चाहिए, तभी जाके बात बनेगी। और अगर बिग बिलियन डे आता है, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ फ्लिपकार्ट अथवा, तो मेरे को वो 10 कंटेनर्स की जगह पे 100 कंटेनर्स एक साथ स्पिन कराने हैं, क्योंकि लोड बहुत ज्यादा आने वाला है। तो वो शेड्यूल कर सकते हैं हम सारा कुछ।
जैसे लोड ज्यादा आना शुरू हो जाए, कंटेनर के नंबर अपने आप बढ़ना शुरू हो जाए। बट उसके लिए क्या चाहिए मुझे? अंडरलाइंग प्रोसेसिंग पावर तो चाहिए। वो कहाँ से आएगी? वर्चुअल मशीन जिसके ऊपर कंटेनर स्पिन होते हैं। अब यहाँ पे मेरे को अगर दिख रहा है कि 15 नंबर ऑफ वर्कर नोड्स बैठी हुई है। अब 15 वर्कर नोड को हर एक को कुछ रैम मिली होगी, हर एक को कुछ प्रोसेसिंग पावर मिली होगी। अब इन 15 के अंदर की कैपेसिटी है कि ये ज्यादा से ज्यादा मान लो कि 1000 या 2000 कंटेनर ही चलवा सकते हैं। बट अगर बिग बिलियन डे वाले दिन मेरी यूज केस में या एप्लीकेशन को 10,000 कंटेनर चलवाने हैं, तो मुझे ऐसे ही मल्टीपल वर्कर नोड्स और चाहिए स्पिन अप होने के लिए। अब अगर क्लाउड एनवायरनमेंट में है तो वहां पे मान लो कि ये एक वीएम एक EC2 इंस्टेंस है, तो मुझे इलास्टिकली मान के चलो अगर ये 15 है तो मेरे को 50 और EC2 स्पिन करवाने हैं। तभी तो जाके मैं इतने नंबर ऑफ कंटेनर्स को उसके ऊपर होल्ड कर पाऊंगा। एक्चुअल में तो मेरे को प्रोसेसिंग पावर और रैम तो लिमिटेड ही होगी ना मेरे पास। तो वो 50 नंबर ऑफ EC2 इंस्टेंसेस कैसे एक्स्ट्रा होंगे? तो वो सारी चीजें भी, जैसे यहाँ पे कुबरनेटिस की बात करते हैं तो उसका नाम है कारपेंटर, नाम से एक एप्लीकेशन आती है। वो देखता है कि कितना लोड बढ़ रहा है। कारपेंटर जाके Amazon का AWS के CLI के साथ बात करता है, वहां पे ऑटोमेटिकली जाके न्यू EC2 इंस्टेंसेस प्रोविजन करवा देता है। रोल्स होते हैं उसके पास पड़े हुए, IM रोल्स होते हैं। जैसे ही जरूरत के हिसाब से जरूरत पड़ी, उसने EC2 और ज्यादा डाल दिए और ऑटोमेटिकली उन EC2 को किस वर्कर नोड के पूल में ऐड कर दिया। सब कुछ ऑटोमेट कर दिया। अब जैसे पीछे से नंबर ऑफ रिक्वेस्ट या लोड बढ़ना शुरू हो गया, तो मेरे टर्मिनोलॉजी होती है इसमें कि भाई मेरे को कहते हैं हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलिंग पॉड होता है जिसके अंदर एक्चुअल में कंटेनर बैठता है। अब क्यूबरनेटीज में सिर्फ हम कंटेनर नहीं कहते, उस सिंगल यूनिट को पॉड कहते हैं जिसके अंदर एक्चुअल में कंटेनर बैठेगा। और कॉम्प्लेक्स, बट आसानी से समझना है तो वो ये होगा कि हॉरिजॉन्टल पॉड स्केलर एक सर्विस बैठती है क्यूबरनेटीज में, जो ये देखती रहती है कि भाई मैक्सिमम जो पीक है यूजेज ऑफ रैम एज वेल एज प्रोसेसिंग पावर ऑफ द कंटेनर, वो कहीं पे अचीव तो नहीं होगी, थ्रेशहोल्ड से ज्यादा तो नहीं होगी। अगर वो थ्रेशहोल्ड से ज्यादा हो जाती है तो वो उसका एक और रेप्लिका कंटेनर चला देता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे पे लोड ज्यादा आ रहा है, सिंगल कंटेनर पे ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, पैरेलली एक और बढ़ा देगा उसका। बढ़ने से क्या होगा कि वो रिक्वेस्ट जो है वो डिवाइड हो जाएंगी दो कंटेनर्स के ऊपर, तो अब हाफ हाफ होगी। अब जब नेक्स्ट टाइम पे ओवरलोड आएगा तो वो एक और कंटेनर बढ़ा देगा, एक और बढ़ा देगा, और ये सब ऑटोमेटेड वे में होगा। कैसे होगा? वो रियल टाइम पे मॉनिटर करेगा ट्रैफिक को, और रियल टाइम पे मॉनिटर करेगा मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स क्या होंगे कि कितनी रैम यूज हो रही है और कितनी प्रोसेसिंग पावर यूज हो रही है उस कंटेनर की वजह से या उस कंटेनर के द्वारा। इससे ये चीज पता चलेगी कि किस पॉइंट इन टाइम पे कितने नंबर ऑफ स्केल के ऊपर मेरे को बनाने हैं। जो हमने लोड बैलेंसर में पढ़ा था ना अभी, लोड बैलेंसर करता गया है पीछे बैक एंड में सिमिलर एप्लीकेशन बैठी होती है, उनके ऊपर बैलेंस करवाता है। और अब यहाँ पे ये चीज हमें बेसिक समझ आ गई कि ये पॉड बढ़ेंगे, एक्चुअल में वर्कर नोड्स बढ़ेंगी, और जिम्मेवारी मास्टर्स की है कि इस सबको कंट्रोल करें। मास्टर में वो मोटा मोटी बोलो तो वो सॉफ्टवेयर बैठा हुआ है या वो कोड बैठा हुआ है, एल्गोरिदम्स बैठी हुई है जो ये सारी चीज को कंट्रोल करते हैं। और अब मैंने बोला कि भाई ये सारी स्टेट हो रही है, एक माइक्रो सर्विस है, हजारों, एक एप्लीकेशन है, हजारों माइक्रो सर्विसेज अलग अलग वर्कर नोड्स पे स्पिन हो रही हैं। अब कहीं ना कहीं पे तो मेरे को मेटा डेटा स्टोर करना है ना कि इस पॉइंट इन टाइम पे कौन सी वाली कंटेनर किस वाले वर्कर नोड पे स्पिन हो रही है। वर्कर नोड मींस किस वाली वीएम पे स्पिन हो रही है। और अगर वो वहां पे वीएम नहीं अवेलेबल हो रही तो उसको शिफ्ट मैंने कहाँ पे किया? जैसा मैंने पहले बोला कि शिफ्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली सारा कुछ, वो देखना है मास्टर नोड। और फिर उसके बाद ये सारा मेटा डेटा कि कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, वो एक डाटाबेस में स्टोर होता है जो एक्सिड के अंदर रहता है। ये ETCD इज बेसिकली डाटाबेस जो सेव करेगा स्टेट ऑफ क्लस्टर। एक क्लस्टर में कौन से वाला कंटेनर कहाँ पे स्पिन हो रहा है, किस वर्कर नोड पे, और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि इन एनी पॉइंट इन टाइम कहीं पे हो सकता है कि डाटा सेंटर फेल हो जाए। पूरे का पूरा डाटा सेंटर जिसके अंदर ये पूरा हार्डवेयर पड़ा हुआ है, वो पूरा ही अगर फॉर द पॉइंट इन टाइम फेल हो जाए, पावर सर्ज हो गई या कुछ भी हो गया, और 1 घंटे के बाद अगर वो वापस से स्टार्ट हो रहा है
तो मेरे को फिर से पूरी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी, फिर से YAML फाइल से वो वहां से डाटाबेस से उठाएगा सारी चीज को, तो फिर से वापस पिन करवा देगा। तो मान के चलो कि लेट अस सपोज 10 नोट्स खराब होगी, 2 मास्टर भी खराब हो गए, मास्टर जो शेड्यूल करते हैं रिकवर कर जाएंगे वो 15-20 मिनट के बाद। बट उन 15-20 मिनट के बाद किस स्टेट को लेके आना है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एक्सिड है ना, ये भी मल्टीपल नंबर में रखे हैं। मल्टीपल क्यों होते हैं कि लेट अस टेक एन एग्जांपल, अगर एक एक्सिड, क्योंकि वो डाटाबेस है, क्रिटिकल है, सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है अंदर, अगर यही फेल हो जाए, ये नोड वर्कर वाली जो डाटाबेस वाली सेव कर रही है, तो क्या होगा? तो ये उसके लिए एक सेकंड वाली नोड उसी के बैकअप की तरह रहती है, फिर थर्ड वाली रहती है, कहते हैं मास्टर स्लेव फॉलो। तो ये एडवांस कंसेप्ट है। बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो कुबरनेटिस का मकसद ये है कि सारे के सारे डिप्लॉयमेंट्स को ऑटोमेट करना, सब चीजों को ऑटोमेटिकली चलवाना। समझ आई? थोड़ी बहुत समझ आई। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि बहुत सारी टर्मिनोलॉजी समझ आई, बट ये कंसेप्ट पता चला कि जरूरत क्या होती है प्लेटफॉर्म की, ताकि हमें मैनुअली चीजों को ना करना पड़े, हमें ऑटोमेटिकली वो करके दे दे। अब कैसे करता है, अब डिपेंडिंग अपॉन योर टेस्ट एंड योर व्हाट आई कैन से, कितनी आपको वो है चाहिए, नॉलेज चाहिए। आप खुद भी देख सकते हो, इसके बहुत सारे टर्मिनोलॉजी, क्यूब प्रॉक्सी आएगी, क्यूब प्रॉक्सी और क्यूबलेट आते हैं, क्यूब CTL कमांड बेस्ड होता है, क्यूब एडम रहता है, कंट्रोलर्स होते हैं, वो अलग चीजें। बट जब भी उसके बाद इनको पढ़ोगे ना, एंड रिजल्ट में यही काम करवाएंगे। मकसद यही है सारे का। वर्कर नोड्स पे डॉकर होना बहुत जरूरी है, रजिस्ट्री यहाँ पे रहती है, जो भी है मोड में। अब होता कुछ भी नहीं है, वर्कर नोड क्या करता है, जब भी यहाँ से वो एक्चुअल में कमांड जो YAML फाइल लिखी है ना, जो मेरे को क्या करवाना है, वो इसको बोलती है कि भाई इस वर्कर नोड पे खाली जगह पड़ी हुई है, उसको पता होता है कितनी रिसोर्स यूज कहाँ पे हो रहा है, क्योंकि रियल टाइम पे वो देखता रहता है, मॉनिटरिंग करता है। इस पे अगर खाली पड़ा हुआ है जगह, तो वो इसको एक इंस्ट्रक्शन दे देता है कि भाई ये वाला कंटेनर तुझे चलवाना है। ये क्या करता है कि इसको ये भी बता देता है कि वो कंटेनर की इमेज कहाँ पड़ी हुई है, डॉकर इमेज। ये वाली फिर वर्कर नोड से एक्चुअल में किसी वर्कर नोड से, इस वर्कर नोड से डॉकर रजिस्ट्री, जैसे डॉकर हब है, वहां तक एक रिक्वेस्ट जाएगी, यहाँ से वो पुल करेगा उसी डॉकर इमेज को, और जैसे हमने मैनुअली डॉकर रन किया था ना, वो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटेड वे में डॉकर रन करवाएगा, कंटेनर स्पिन अप हो जाएगा, पॉड के अंदर पॉड आ जाएगा। सिर्फ कंटेनर स्पिन कराना ही एक सबसे बड़ा चैलेंज नहीं था, बड़ा चैलेंज होता है नेटवर्क, कि एक कंटेनर दूसरे कंटेनर से बात कैसे करेगा। तो उसके लिए बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आई कम्युनिटीज में। पॉड, पॉड को सिंगल यूनिट माना गया, जैसे हम देखेंगे ना वर्कर नोड्स का आगे। तो पॉड्स कुबरनेटिस का एक ऑब्जेक्ट है या ग्रुप है? पॉड इज बेसिकली ए मैनिफेस्ट, और यू कैन से एक इंस्टेंस है जिसके अंदर मल्टीपल कंटेनर्स रन कर सकते हैं। Like अब पहले containers हम, are inside a, okay, the image is here, right? कंटेनर रन्स All right. इनसाइड ए पॉड। ओके। अब दिक्कत क्या होती थी कि जब हम अभी चला रहे थे ना कुबरनेटिस अपने डॉकर के अंदर कंटेनर को, तो क्या होता है, हर कंटेनर को अपना IP एड्रेस मिल जाता था, फिर हम उसको मैप करते थे। अब यहाँ पे ये है कि कंटेनर को IP एड्रेस नहीं मिलता, जो पॉड बैठा हुआ है ना ऊपर, उसको एक यूनिक IP एड्रेस मिलता है। एंड स्केल आउट करने का, जैसे इस पे थर्ड पॉइंट लिखा था, स्केलिंग टुगेदर, सो कंटेनर ए एंड कंटेनर बी ओवर हियर, दे बोथ विल बी अगर एक स्केल। पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स हैं, तो स्केल कंटेनर नहीं करेगा, स्केल पॉड करेगा। हाँ, स्केल पॉड कर रहा है, सो तो उसके अ अंदर जो भी टास्क, चीजें हैं उसकी मल्टीपल रेप्लिका बन जाएंगी। all right, so a task if can be done by container A would be just inside container A, and if the processes are exceeding the limit of the containers, so it would be automatically switched No, by the pod. not like that. Not Not like like that. this. Basically, the thing is, container A over here is a functionality having, let us take an example, microservice number one. Okay. Microservice number one. Container B is not actually microservice one. It is a sidecar, or so may it be initiator also. It is a basic functionality what is needed to start container A.
in some times, at some point in time, some typical applications work like that. That to start a first, let us take an example. Let us take a very basic example that container A is containing a NoSQL database. Though databases are not being put into the containers, the RDBMS one, but in some special cases, NoSQL one can be put inside the containers because if they don't want to have any sort of state, so stateless and stateful, that will come into picture afterwards. So for the basic functionality or so basic understanding, let us take an example. We have container A, which will be having database, NoSQL database instance in it. And to start the NoSQL database, we need to migrate the actual data from a place, may it be CSV file or character file, into this database. And that particular functionality of migration of actual data will be taken care by another piece of software code. Those things are called initiators or init containers to initiate the functionality of second container. So container B over here will be acting, holding the code for initiation of database data into the database itself. So before the container A comes into the running state, container B's actual task is to migrate the data from anywhere to this container A so that it can consume that data and initiate itself afterwards. So when container B will be successfully had been done the job, it will shut down. It will close it out. And then container A will start. And actually pod will be having single container running named container A. Container B will be a sort of initiator for container A. This is the actual Okay. use case where we use multiple containers inside a pod. Okay. And for your case itself, when what you are saying that to scale on to, if let us take an example, container A having NoSQL database is having a lot of load on it, like user requests, and I want Yes, to sir. scale the container A. So then what I will be doing? I'll be scaling a pod itself. Then we will be saying this pod is scaled to a factor of 3, means container A inside a pod. So will be scaled itself. Not like that. Inside a pod, container will not be replicated in the different container A, container B, container C. Actually, the pods will be scaling. So like there are in scaling, horizontal and vertical scaling, like there's Mhm. the types. So inside a Horizontal, pod, yes. Horizontal scaling means that a pod will be replicated itself. yes, sir. Yes, sir. New Yes, sir. instance of pod. And vertical scaling means we will be giving We'll be more adding resources to the pod. uh, Resources devices means add VMs like add over RAM it. will be increased, not RAMs. Yes, sir. like Uh, RAM consumed by the pod will be increased and processed. a In this processing case, now power. when you will be writing the code for YAML file to spin up Yes, a sir. pod itself, then in a section of that YAML file or the code, we will be defining what sort of resources are needed by this pod. We will be saying Yes, sir. that this pod requires 512 MB of RAM or 512 GB of RAM, whatsoever it is, and this pod will be using 12 cores of processors. In this case, this 12 cores of processors and 512 GB of RAM can be increased in the YAML file to, let us take an example, 700 something GB of RAM and to 24 cores of processor. This is called vertical scaling. All right, sir. Yesterday, just like the bench I'm sitting at, so the old team is working on Docker itself. So Mhm. like I saw the instances and their errors. So everything was working fine. And after like 70, 80 images, uh, some images were unable to be pulled. So Mhm. from a particular container. So like it could be like authentication and resources were, it was showing that you should upgrade it. So what like upgradation error, like is it related to what you Like just you told are or saying that in a VM itself, they are spinning up multiple number of containers. This is what the use case they are using.
So if you will be spinning multiple number of containers onto a VM itself, then automatically each and every container will be pulling his resources, what are needed from the underlying VM's hardware only. And if at any point in time, actually the resources allocated to the VM are limited in nature, Yes, may it sir. be using, let us take an example, 16 GB of RAM, as well as a VM is using consuming 16 GB of RAM and is consuming 12 cores of processor. At the point in time when the number of resources consumed by this VM exceeds by the number of resources consumed by the containers, it will be giving the error. I don't have sufficient resources to spin up a new container because all other resources of VMs are being hogged by or being used by the previous container instances itself. So then Yes, it will sir. say, upgrade the resources, give me more resources from the Uh-huh. VM. This is what of error you will be getting at that point in time. Okay. Okay, okay. So that is what I was saying in this previous image itself, that this condition will occur in this Kubernetes platform also. So at a point in time when number of containers will exceed the actual total resources capacity of the all the worker machine, may it be RAM as well as the processing power, then what will be needed, that let us take an example of EC2 or AWS. We need to have more virtual nodes, virtual machine nodes added to this cluster, what can increase the physical RAM as well as processing power of this cluster itself, so that more containers can be accommodated. This is how Carpenter named service comes into picture. Carpenter do what is it? It communicates with AWS and command line interface. Will ask that now I need more EC2 instances to work as the worker nodes for my cluster. Please allocate these EC2 or please spin up these new EC2 instances with such and such RAM as well as such and such hardware, and then allocate those EC2 to my worker node pool. It will be doing all this automatically so that more number of containers can be accommodated in this cluster. Now understood the use case. Yes, sir. Okay. Now pod is what? Pod is basically where container resides. Why we need pod? To have a IP address so that we can communicate within the cluster itself. Means here, if a pod number 1 is running over there in this VM and pod number 2 with other microservice container is running on this VM, then what we need to have the flawless communication of the information or the communication between the pods or containers itself. We want to have a single network on all these worker machines. Means all the worker machines should be connected to a single network, means a single Docker network in which all the pods will have the IP address from that particular network address pool or subnet only. What that is called? That is called Kubernetes Pod Network CIDR. This is a new terminology what we use in Kubernetes. Pod Network CIDR is what? A subnet what is being used by Kubernetes internal pods. Okay. Now again, when all the pods contain having the containers and containers inside them will have microservices. So virtually pods will have microservices pinned upon, and now pods are communicating with other pods, means various microservices are communicating with other microservices, and all this is happening inside this Kubernetes cluster worker nodes, and flawless networking is being provided by the Kubernetes pod network CIDR. All those things are fine. Now, equality in Kubernetes is pods can at any point in time, may it be due to resource failure, may it be due to virtual machine failure, underlying worker node failure, or may it be because of any error whatsoever occurred inside the software stack itself. They can die at any point in time, and it will be the responsibility of master node to bring up the similar pod onto any other worker machine which is having the resources. So what will Sir, happen if at any, yeah.
Sir, how safe would such an architecture be against a hacking attack or against a DOS attack? Like if there are n number of requests at any certain point of time and the pods are not working, so that would result in crashing of the architecture and hence loss to the business and and the economic activity of a particular country as such. So is there a way out in such a case? Good question. So actually in Kubernetes, this all the Kubernetes for network CIDR is a private CIDR. So it don't have an access to the external world. This particular security measure is already taken care by the architecture team. So what we are talking about is for network CIDR is a private network CIDR which can't be accessed from external internet machines until and unless we will have some different services like ingress and load balancers deployed inside a cloud environment also. So this all the communication to these internal network CIDRs will be through firewalls as well as various other artifacts like load balancers and ingress. So that is how actually security is upgraded in this. So no one can from outside directly ping onto my pod's IP address. It is not possible because they are private in nature. So like in the recent times, like we have an organization called National Cyber Coordination Center, which was established in India, and that does not have any legal framework as of now. So if the government wants to crack into a certain company which is of Indian origin only, so like could they actually bypass a security architecture in that case? See, the point is nothing is fully secure in this universe. That is the point. If a hacker want to violate the security loopholes or so, this is possible, but it needs a lot of patience and lot of knowledge of the actual architect. To deal up upon with these things, we will be having multiple layers of securities being provided to the actual architecture. Here, the first layer of security is we will be having private CIDR of pods, means no one can even breach into the actual pod network CIDR because it is private in nature. We will to be able to communicate to the private IP address, we need to have to go through a NAT. So first layer of security is the internal netting and firewall policy may it be during using the load balancer CIDR or ingress. First is that. Apart from that, the data center over where the whole the cluster is running, they will be providing their new layer of security, which will be if we will be going inside any data center, we must have been gone through some sort of services like you had heard of AWS Inspector service. AWS is having a lot of firewalls, WAF, Web Application Firewall, which is capable of checking the DDoS attacks, which is capable of checking the various, you can say, activities what seems to be um, basically Threat. uh, yeah, हिंदी में भी नहीं आ रहा वो वर्ड यार So इंग्लिश threat related to national security aspects, I suppose. वो शक शक की निगाह से देख सकें जिसको Suspicious, sir. जिस Suspicious. A suspicious act. yes but what felt to be suspicious. So web application firewall is strong enough to basically sense or sniff those activities and act upon to the rules like that. So the cloud service providers are giving the hell a lot of attention to the security itself. Nowadays, Palo Alto is a company which is basically giving the firewalls and all those things. They are consuming the AI capabilities to actually sniff it upon that what sort of activities are going, and they will be predicting via the activity tracking that this can happen in future. So proactively they do the rules and all. So security industry itself is a very vast industry. Things are happening over there, and
hackers are cracking onto these things. And apart from that, the companies are making various other advancements to stop those sort of. So this is a play of mouse and cat. This will go on. Okay. So what we basically need to focus on over here is that worker nodes will be having a pod network CIDR in which basically the pods will be getting the IP address from that particular pod network subnet or CIDR. And that CIDR is private in nature. And to get the access to the pod itself, we should be going through a services framework, what is called maybe ingress or load balancer, to communicate to the external world over the internet and to communicate within the pod network CIDR. For the use cases, we use cluster IP service. So that is private in nature. So this terminology you will come to know in Kubernetes, that how cluster IP can communicate within the network using private IPs, and to get the communication outwards towards the internet via netting and all those things will be done in autonomous fashion, automated fashion by the master nodes. They will be responsible for creation of the services, may it be of cluster IP type, may it be of node port type. Node port means the worker nodes having the Linux operating system. In this case, I am saying, will be having different IP address. Worker nodes IP address will be different, may it be of public nature or private nature. And the pod network CIDR will be different. Like in our case, VM was having different, and Docker engine will be having a different IP address scheme in that. Similarly, workers will have different IP address, which can be communicable from the external networks or internet. So node port means pod network CIDR's IP address of the pod itself or the service itself will be linked to the IP address of the worker node via network address translation. So anyone, if will be pinging on to the IP address of the worker node along with the subsequent port, what will be forwarded, will gain the access to the pod itself. Will be getting the requests resolved from the web server also, or server spinning inside the pod. So this is how actually networking, complex networking, is taken care in Kubernetes in an autonomous and automated way. Got to know about basics, like what basically pod is, told you earlier. Second is service. Service means, no point, what I was discussing is pods are mutable, means they can die at any point in time, and as per the resource utilization or any failure to tolerate the fault inside the system, they same pod can be spun up upon on another worker node. So once your pod will be dying and will be spun up upon to the another worker node, the IP address of that pod will change, because the IP addresses of pods are dynamic in nature. They are dynamic in nature. Means the private IP will be changed. So if I'll basically rely upon the pod's IP address only to have the communication between the microservices, may it be pod A1 is having a container A with microservice 1, pod 2 is having container with microservice 2. And if these microservices need to communicate to each other via their IP addresses of the pod, they need to communicate. So if a pod is dead at any point in time due to any condition and is respun upon any other node, then its IP address will be changed. Then how the pod 2 will come to know that I need to change the IP address? That will be cumbersome to have the registry of all those things. In that particular issue, to scrub upon that particular issue, services came into it. Service will be is a basically sort of manifest or artifact inside a Kubernetes platform like pods itself, but its basic purpose is for networking only. So service will have a static IP address. They'll not die. Okay. And they'll be linking onto the pod itself. So internally, service registry will take care that what dynamically pod IP is changed to, and it will be linking onto the new IP address by default. So it is taken care by labels and all those
pointers we use in the YAML files. That is the Tags. advanced tags, labels, and all those things in the YAML files, where we are writing the code that what we want to create in the deployment itself. So I'll be showing you a basic YAML file afterwards. So this is how basically Also, we sir, grub. Yeah. before you Yeah. move on, these pods and containers, I had this question in container as well. I should have asked then. But like a container is kind of an instance which help us reduce the cost or eases out our VM usage. So like it can be of some KBs, MBs, or like the amount it has dynamic memory, I am supposing. You are saying container. Container is Yes, sir. nothing but a running instance like a VM. Okay. Yes, sir. So what sir will saying? We will be saying like that. Na? It like in yesterday's task itself, we had spun up upon some container using the Docker image itself. Yes, sir. When we packaged that Docker image itself, that was the yesterday what we used the Docker image that was of 240 MBs itself. That Yes, sir. Docker image was of 200. Let us take an example of that Docker image and analogy to that Docker image to the ISO file of the Windows operating system. Okay, It will act like an ISO file to install a operating system on my laptop itself. So sure. it is Windows ISO file is 4.5. 4.25 GB or so, Uh, like that. yes, sir. 4.5 GB or so. Okay. So when we will be installing Windows from that ISO file onto my laptop itself, the whole size of operating system in C drive will be of may it be 4.7 or 5 GBs itself, Okay. without any other functionality working. And when we will start using that Windows operating system, it will be creating more and more dynamic files inside it. And it Yes, will be sir. consuming more and more memory, as well as the size will expand itself as per the user. Same is the case with the containers. It All will be right. having a size more than the Docker image itself. When it will start spinning up and start functioning, it will be creating the more and more files inside it, and the size will expand as per the usage. Yes, sir. This is the analogy to the container. For you, the size of container is not of KBs. It depends upon what Docker image we are using, Like we how can much number of assign it, or like I was asking in that relation, like amount of memory would be assigned to it, like processors memory and the is something storage. different. Memory is something different. Here I am talking of the hard disk space it will be consumed, hard drive space, Yes, storage. sir. Memory is what we can assign to the container itself. Memory is The what we can basically limit to the container. In the YAML file itself, I can always write that this much of memory can be should be assigned to the this particular pod or container, and this much of CPU should be assigned to this pod or container. Then while spinning up of the container, while converting the Docker image into the container, at that point in time, the platform will take care here, Kubernetes will take care that this much of RAM and processing power minimum should be available to this resource container. So And there would be a basically it will lot of bind. aspects like whatever we see in our normal PCs, like logical processors, the cache memories, container would be having all of them, right? Or Yeah, basically container will act like a very miniature of the VM, but not most of them, every time they are consuming the operating system kernel part from the host VM only. okay, 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 In got this it. case, the worker machines, okay, yes, the worker machines, in this case, na, the worker machines operating system, may it be Linux or Windows, it will be responsible for giving the kernel functions to the pods itself or the containers inside the pod itself. So to take you the perspective over here, Kubernetes in Kubernetes, advanced concept, we can always have a mix of worker nodes. Worker nodes, few of the worker nodes will be having Linux operating system installed over that. Like few of the worker nodes will be
the VMs with Linux host operating system, Yes, sir. and maybe few others will have the Windows host operating system installed on that. So what is the need of few for Linux and few for Windows host operating system? Then what we will be doing, the containers with the Linux based distribution, we will be spinning upon the VM having Linux based host operating system, and the Yes, sir. containers with the Windows server core based operating system. We have Windows container also. That will be using the Windows host operating system VMs to spun upon. Windows containers will never spun upon the Linux-based host operating system Windows VMs, and Linux will never spun upon the Windows host operating system. But in your case, in Docker Desktop, they are creating a over to the Windows. They are creating a environment, Linux environment. What is being consumed by the Linux? That is why in yesterday talk and day before yesterday, I told you spinning up upon Linux containers on a Windows environment is a bit tedious, bit more complex, and you need to configure a lot of things in the Docker desktop. Yes, sir. That is why I suggested you to use base operating system as Yes, the sir. Linux one. Linux one. And sir, in a pod, similarly, Linux pods would be like Linux containers. The pods containing the Linux containers would be separate, and the Windows one would be separate, or they can be interlinked, like they can be together. They can communicate with each other because Yes, they'll sir. be communicating via API calls and RPC calls itself. So in your case, let us take an example, an application with microservices, having a few of the microservices being spun up upon into the containers having the Linux-based operating system. Fine. And few other microservices are consuming Windows server core based operating system, as for their containers itself. So they have Okay, some sir. different functionality. So always they can be spun up onto a single Kubernetes cluster. And that single Kubernetes cluster's worker node will be having few of the worker nodes having Windows based host operating system, and few worker nodes will be Linux based. So Linux containers will work upon the Linux based operating system with worker nodes, and Windows will be working on the Windows based operating system worker nodes. Okay, but the actual networking or CIDR what is for the network Kubernetes network is same. The CIDR is not worker machines based. It is based on the Kubernetes full cluster. So we are saying pod network CIDR, not pod Linux network CIDR, pod Windows network CIDR. So that particular network will be common, and the IP address, what pods of Windows container are getting, and the IP address, what pods of Linux operating system are getting, will be of the same subnet and can, or you can say, flawlessly communicate with each other. Okay, sir. This is why clusters comes into. So you understood what service is, what are different types of service. I'm saying service means one is cluster IP. The IP address will be the private IP address. Another one is node port. Node port is nothing but a netted service with the link to the worker node's IP address. How networking is being completed. It is explaining the same, that how without NAT they can communicate on, and how with NAT the services can communicate. Ready? Apart from that, we normally are using application load balancers. We have learned of application load balancers, how application load balancers translates the requests of various URIs or URLs over to the various different, you can say, servers or the VMs hosting the different instances of server. Here, Ingress is similar to that. It is simplified layer 7 access to the Kubernetes services. Like what I'll be doing, I'll be giving a URL address to the Kubernetes cluster. It will do what basically is Ingress basically wants to have a application load balancer spun outside the Kubernetes cluster itself.
so that that application load balancer can have listener, which will be of this particular listener with this particular URI or URL address, anyone, and the targets for that particular application load balancer will be actual services or pods spinning up inside the cluster. This is how it is, again, an advanced concept. People take 2-3 months to actually fully understand how Invensys works and all. In very basic, what I can say you that it is a mixture of application load balancer for the Kubernetes clusters. So basically, what my intention for today's introduction to the Kubernetes is, just you need to get to know about what Kubernetes is, how it relates to the container, and how basically I'm not expecting you people to have very advanced knowledge of the things also. So very basic like that, what worker nodes are, what master nodes are, function of worker nodes, function of master node, what pod is inside that you already had discussed in a very beautiful manner. It's fine. Afterwards, what services are. This is what my intention is. Okay. So this is all basically for today. What I want to discuss with you, and today I'll not be giving any of the task itself because from Monday onwards I'll not be present, and just go through the previous tasks which have not completed the Docker tasks itself. Please complete them all and go through all the videos what we had discussed. I already had told you that the way out to grab the knowledge is, if you are not getting the knowledge at that point in time due to the overload, or you can say due to any of the issues, you can always go afterwards to those videos when you will be having your mind set up in that state, and when you have got basics cleared, you can always go to those videos, previous videos, have the metadata from the chat itself, learn for the new things, just go through them, have the basic concepts of the and ideology of the things, and I think what I can say, happy learning path with the enthusiasm itself. So from Monday, I'll not be present. I believe Krishna Ali will coordinate with other guys and he'll propose you some new timings to the sessions and all. As all fine from any other, any of the query from you people who want to discuss for any of the topics we had covered till now. Anything you want to convey me to? That will be fine. Have a good day. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Very much.